Hello, Namaskar, good afternoon. Welcome to NCRT's live interactive session. This is Simran Singh. You all are watching us on PM eVidya channels, or you might also connect with us through our YouTube channel that you all are well aware of. It is NCERT official. A very warm welcome in MANODARPAN Paricharcha, a series of initiatives on mental well-being and psychosocial support for all our students and our viewers watching this session. MANODARPAN Paricharcha is a special initiative by the Ministry of Education. So in case you want to explore more about it, here is the website flashing on your screen. It is www.manodarpan.mhrd.gov.in. Besides, for this particular session, there's a national helpline. So you may note down this number, that is 844-844-0632. Our stream is running live on our YouTube channel, that is NCERT official. Besides, you can also watch this live video on our Facebook page, that is National Council of Education Research and Training, NCERT. Once again, a very warm welcome to all our viewers in this session. This is how you can communicate with us and contact us throughout the session. Throughout our session, this will run till 4 p.m. If you have any of the queries, feel free to reach out to us in the comment section of NCERT official. In this discussion, we are going to discuss about a very significant topic, because all we have today is about social media, peer pressure and coping strategies among adolescents. And to discuss more on this issue, we are joined by a couple of esteemed panelists in the conversation. So let us introduce our panelists to all the viewers who are watching our session. Our first panelist for MANODARPAN Paricharcha session is Dr. Rajiv Ranjan. Namaskar, sir. नमस्कार मैम, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार एंड वार्म वेलकम फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. Sir is assistant professor at RIE NCERT Ajmer. We also have with us in the conversation Dr. Seema K. Namaskar, ma'am. Namaskar, ma'am. Thank you for having us. Thank you, ma'am. Is assistant professor at RIE NCERT, joined in from Ajmer. In the conversation, we are also joined by Dr. Usman Aziz. Namaskar, ma'am. Good afternoon. Yes, a very good afternoon. Thank you so much for having me. Thank you for being here. Ma'am is lecturer at Department of Education, South Campus, University of Kashmir. We also have with us Dr. Dharna Bhardwaj. Namaskar, ma'am. Good afternoon. Namaskar. Good afternoon. Thank you for having me. Welcome. Ma'am is counseling psychologist and director at Pratiti, New Delhi. Then our last panelist of the session is Dr. Romesh Kumar. Namaskar, sir. A very warm welcome. Namaskar, ma'am. Thank you. Good afternoon to you and all the viewers. Thank you for having me. Sir is head of counseling cell, director of school education, has joined in from Jammu. Viewers, throughout our live interaction, if you have any of the queries, so feel free to reach out to us in the comment section of NCERT official. We'll be eagerly waiting for your questions. So let's begin our discussion on social media, peer pressure and coping strategies among adolescents. Now, peer pressure is something that all of the teenagers, somehow they go through this phase in their life, and when social media comes into the picture, it adds another layer to it. But it can also turn out to be a coping mechanism. It has its own boon and bane. So let us understand social media and the current scenario. For that, I would like to request Dr. Rajiv Ranjan to please present his views. थैंक यू सो मच सिमरन मैम, मुझे और हम सभी को इनवाइट करने के लिए. Social media, today's need, we cannot live without social media, we all know. And in general, for students of India who are watching this show, MANODARPAN show, for them, it's a simple way. It's a computer-based technology, any technology, either it is mobile phone or either it is desktop or any other technology where you are going to share your ideas, your interest, you are going to learn something, and you are going to share anything through this media. That will be computer based and it will be social media. But again, if we go for social media, nowadays it is widely spread all over the world. That is the thing, and everything should have limitation. But here the training of social media is not there. What is having in our community? Generally, the community people will have a watch on the children, on adolescent age children. They will have a watch for anything. They knows that how to train this,
अगर कोई बच्चा अगर विलेज के अगर किसी एक एरिया में जा रहा है और वो एरिया सेफ नहीं है, तो कम्युनिटी पीपल उसे गाइड करते हैं कि ये एरिया सेफ नहीं है और आप यहाँ नहीं जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते, इधर कोई फॉरेस्ट है या इधर कोई रिवर है या कोई भी चीज है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट हैंड में आता है, अपने पास आता है, और इसके लिए कोई गाइडेंस या ट्रेनिंग नहीं है अभी तक हमारे बच्चों को। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसी तरह से वो सोशल मीडिया की ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि सोशल मीडिया आज के टाइम में बच्चों के लिए ह्यूमन बीइंग से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिलेशनशिप के को क्रॉस कर जाए, जैसे मदर हो, पेरेंट्स हो गए, मदर हो गया, फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब लविंग वन थे। कोई आंट हो गई या कोई अंकल है आपस में, या नेबरहुड में कोई पीपल है जिसके पास हम बैठना चाहते थे और समय अपना बिताना महसूस करते थे और वो बहुत अच्छा फील होता था। इवन हमारे जो फ्रेंड्स होते थे, अदर इट इज सेम जेंडर और अपोजिट जेंडर, उनसे हम अट्रैक्ट होते थे और उनके साथ भी बैठना पसंद करते थे, उनसे भी बातें करते थे। लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है जिसने रिलेशनशिप को भी क्रॉस कर दिया है। बहुत सारे टीन एज, एडल्टहुड या और भी एडोलेसेंट एज, मतलब लेट चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं या अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं, यहाँ तक कि वो ग्रुप्स में नहीं रहना चाहते, सोशल ग्रुप्स में नहीं रहना चाहते, वो सोशल मीडिया पे रहना चाहते हैं। ओके फाइन, तो इसका मतलब है कि इस टाइम में दिस इज नॉट इन लिमिटेशन, आप रह सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन लिमिटेशन। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स, वन इज बेनिफिट एंड वन इज हार्म. Both the aspects will be discussed in detail by our senior counselors who are present here. But there are two ways. One is, if we go for benefit, it helps in learning and understanding. One part is there. Another one benefits, and it's a great benefit, the people who don't have social group. There are like persons with disabilities are there. There are old age people. There are people who are suffering from a particular disease and they are feeling loneliness at home. They have to stay at home or hospital and they don't have other people to share. They are in ICUs. They are limited. I'm not telling that all ICUs it is allowed, but there are places they are suffering from some particular disease and they have to use and they gets benefited also. So in brief, social media has many benefits also, but on the other side, there are harms, and because it is not limited and because of lack of the appropriate guidance and training from the childhood or from the child when he is growing up or she is growing up, lack of that, the child gets addicted with the social media. And when he gets addicted, and generally when he passes more than 3 hours of social media use, then we say that it is somehow psychopathological symptoms are there. So like one research shows that in 2018 in India and US, there more than 45% children or adolescent or teenage children are engaged more than 3 hours in social media. This was one study which were done on 1200 children. So that's why there are many number of studies like this. So that's why it is harmful. Now, parents, teachers, and community people, we need to understand that two things. Either it is habitual use, it is non-problematic, or it is possibly the child is going in addiction. When the child is, or the teen group is going in addiction, so there will be lots of difficulties like fear of missing out. When he is in social group and he will not be engaged in social media and he will be losing the group, even in online classes also, then he will be having fear of missing out from the group. And there and again, social networking sites, addiction. There are different types of networks where the child gets addicted and it is difficult for him to avoid. So that's why there is one symptoms, or there is one problem which is very famous, that is nomophobia. If mobile is not there in my hand and it is not near me, I will have phobia. I will be very much restless. I will, even in night also, night 2 o'clock, 3 o'clock, even while sleeping also, we need to take mobile and we have to see. Many people have these habits that in the night also, when they will get up, either it is 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock,
before seeing the time, that is it 2 o'clock, it is 3 o'clock, or whatever is the timing, they will just click on the WhatsApp, they will just click on the Facebook, that anything is there. So we need to think about this. This is a phobia where we are totally addicted towards the mobile or social networking sites or social groups, and it is difficult for us to avoid. So the important part is we need to understand that it is the use is become a way of being, and it is contextual, it is useful, or it is the actual psychopathological symptoms is there. So we have to differentiate between these two, and we have to observe. As I told you, then discuss it will be detailed by other faculty members and other experts who are available here. So parents and teachers and community people must have a watch on the children. So that's why it is very important to protect our children from this particular social media and harmful effect of the social media, because ultimately it is going to harm the emotional and cognitive part of a teen. So that's why it is very important. Slowly what happens at the end, I would like to say, children have, or especially teenage group, they have pressure from the peer. They want to be in group. If they will not take their attention, if the peer group is taking attention by posting some comments or some photographs or something getting from somewhere, in the same way, if the child is in the group, suppose I am a child and I am in the group, and if I am not posting anything for another hours, there will be a response from that side, or my 2-3 friends will say, what happened, Rajiv? Arey Rajiv, aapko kuch ho gaya kya? Rajiv, you are missing out, you are getting emotional. Some comments will be passed from that side. So in this similar way, there are pressure on the peer. A teenage child, if he is not posting anything, if he is not getting attention from the others, if he is not replying, if he is not or she is not giving response, then he will get a pressure from the peer and he has to use social media. So in the similar way, many things are there where the children are addicted with the social media and there are harmful effects of that. So that's why in a comprehensive way, we have to train or guide the children from the beginning, from the early childhood itself, that what is the limited use and what is the proper use. That is one thing I can say. Over to you, Simran ma'am. Thanks a lot for that interesting insight from your end. I'll just take a few moments to highlight the key takeaways from your discussion. So you appropriately mentioned about social media, that it cannot overtake the relationships that we have with our closed ones. And also, of course, you told us about the boons and the benefits and the disadvantages along with social media, and the fear of missing out, that is commonly abbreviated as FOMO. Apart from that, the peer pressure, or because of the peer pressure, adolescents feel this urge to fit in the groups. And very rightfully you mentioned about the guidance that should be provided to the children just in the initial phase of their life. Thank you so much, sir. So as you rightly mentioned about the advantages and disadvantages both when it comes to social media, so let's have a look how it can be a supporter or a helper or act as a catalyst in the advancement of an individual. For that, I would like to invite our next panelist, Dr. Usma Nazir. Ma'am, I would request you to please highlight and apprise our viewers about social media's contribution in the development of adolescence. Yeah, Dr. Usma. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank So you. in that session, I'll be talking about adolescence and how it contributes towards the development. So basically, adolescence की बात करते हैं, it's a very crucial stage, very important stage. Basically, is a transition stage from the childhood to the adulthood. And nowadays we see the adolescents, jo bhi is time, they are growing up in the age of technology. So they are somehow called the digital natives. Now we are calling them digital natives. Agar hum social media ki baat karenge, they have really impact on the lives of the adolescents. We have a smartphones now and we have all type of social media formats in that. So basically it has really contributes in the all sorts of development. If we talk about we have a cognitive development, we can talk about it has influence on the social development, it has career development, it has influenced on plus moral development, and so many other sorts of development are done by the social media. So firstly I'll talk about how it influences cognitive development.
So basically अगर हम देखेंगे social media influences in mental processes. अगर हम देखेंगे आजकल हम we acquire lot of information, lot of facts from the social media. हमारे पास online books होती है, हमारे पास online series होती है, हमारे पास gaming होती है, quizzes होते हैं, mock tests होते हैं. So in fact that really enhances the cognition of an individual. हमारे पास e-पाठशाला वहाँ से भी हमें एक अच्छा कंटेंट मिलता है, एक अच्छी नॉलेज गेन होती है, एक इंस्टेंट मिलता है, एक इंस्टेंट नॉलेज मिलती है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. इनफैक्ट वी कैन से अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया को हम डिफरेंट एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं. एक आइडिया को अंडरस्टैंड करने में हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं. वेदर अगर हम एक आइडिया को समझ नहीं आते, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू यूट्यूब, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अनदर मीडियम, डॉक्यूमेंट्रीज आर देयर. अगर हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय different mediums. So basically अगर हम देखेंगे in social media हमें same type of like-minded people मिलते हैं. So that has also stressed out our mind. हमारी stress को भी हमें relax मिलता है, and that has definitely contributes towards the mental development. या creativity भी enhance होती है through social development होती है, cognitive development होती है. अगर हम cognitive development को छोड़ के social aspect की बात करेंगे तो एक अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया हैज बिकम एन एवेन्यू, या आजकल के में एक एवेन्यू बन चुका है टू कनेक्ट पीपल, राइट. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे वी कनेक्ट विद द फ्रेंड्स, we share our information, we share our ideas, thoughts, messages, whatsoever. So basically अगर हम देखेंगे इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं अपने नेटवर्क्स को, और इससे क्या होता है हम अपने पुराने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हैं, अपने न्यू फ्रेंड्स फ्रेम आउट करते हैं, या अपने रिलेशन को एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. ठीक है. सो अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया हाउ इट इन्फ्लुएंसेस करियर डेवलपमेंट, राइट. नाउ इट हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द करियर डेवलपमेंट. हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स है, सोशल मीडिया के बहुत सारी टूल्स है. फॉर एग्जांपल वी हैव ट्विटर इज देयर, वी हैव लिंक्डइन, वी हैव फेसबुक. दैट इज रियली इंक्रीजिंग एंड बिकम हेल्पफुल फॉर द करियर डेवलपमेंट. नेटवर्किंग अगर हम देखेंगे, नेटवर्किंग इज अ की. Nowadays networking is a key for the career development. जो हमारे connections from the LinkedIn हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, उस जरिए से उस माध्यम से प्रोफाइल बनाते हैं और हमें अपनी मनपसंद की जॉब मिलती है, अपने इंटरेस्ट की जॉब मिलती है. So this is how social media is contributing towards the career development. Basically these are some aspects जहाँ पे हम देखते हैं कि social media कैसे contribute करता है towards the development of an adolescent. कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे आजकल कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का मॉरल डेवलपमेंट में भी होने लगा है. मॉरली हम डेवलप होते हैं सोशल मीडिया के जरिए. सो अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया के जरिए से एनहांस करते हैं हमारी वैल्यूज को. फॉर एग्जांपल टीम स्पिरिट हमें समझ आता है, वी पेट्रियटिज्म के बारे में हम समझ सकते हैं. इनफैक्ट वी हैव सर्टेन मोटिवेशनल कोट्स भी देखते हैं हम. सो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, हमारा मॉरल डेवलप होता है. या वी कैन सी इन द मूवीज what we see, they promote goodness, right. They also promote goodnesses. So this basically they saw how we can come over from the evil. So basically moral development भी एक social media के माध्यम से हो सकती है. Yeah, plus there's another thing we can talk about, life enhancing skills. These are very much critical skills, very much important for the life, and plus social media really helps in enhancing these kind of skills. For example, it enhances our communicative skills. हमारी communication skills है वो भी इस माध्यम से enhance होती है. अगर हम देखेंगे social media has helped in solving the problems. हमारी problems को भी अगर हम देखेंगे उससे help मिलती है. We try to solve problems by using the social media. या अगर हम देखेंगे confidence भी एक बच्चे में gain होता है. Plus अगर हम बात करेंगे self esteem की, सेल्फ एस्टीम भी इस माध्यम से एक बच्चे का जुड़ जाता है, बढ़ जाता है. इनफैक्ट आई कैन से सपोज अगर हम बात करेंगे हमारा कोई एडोलेसेंट है, उसने कोई अपना आइडिया, कोई पोएट्री, कोई थॉट अपना शेयर किया, एंड बाय द सोशल मीडिया ही गेन एप्रिसिएशन जिसको मिलती है. सो कहीं ना कहीं जब वो एप्रिशिएट होके जाता है तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कहीं ना कहीं हाई हो जाता है. सो दीज आर द थिंग्स किस तरीके से अगर हम देखेंगे किस वजूहात पे सोशल मीडिया कैसे एक इंसान को डेवलप कर सकता है, पर्टिकुलरली एडोलेसेंस. आई अर्लियर टॉक अबाउट कि एडोलेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड. आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. Yeah.
Yeah, thank you so much for providing those important insights to all our viewers. Well, you mentioned about how social media could shape the development of an adolescent. So, some of the key highlights from your discussion was you mentioned about cognitive development. Whenever we talk about social media, there are a lot of opportunities. We can actually explore it, be it videos, audios, quizzes, or games that actually help in shaping the personality of an individual. Then, when you to connect with people, very rightly mentioned career development. There are a lot of opportunities that we can find on social media. You can look for different jobs. Even the person who is hiring or who is requiring a person or an employee to work in their organization, so they could actually hire someone based on the capabilities or the post. And yeah, the spirits of patriotism and team spirit, along with the dedication, we can watch with the motivational videos, followed by confidence and opportunities of thoughts presenting their views. Thank you so much for bringing those insights in the conversation. Let's move forward in this discussion. As we discussed how social media could act as a catalyst in the advancement of a human being, at the same time, it has, like every coin, they have its flip sides. The one is the positive, another one is the negative. So the negative one is it affects mental and emotional health of an individual. But how does it work in that scenario? So I would like to request Dr. Dhana Bhardwaj to please reflect more on the aspect of social media affecting mental and emotional health of an individual. Dr. Dharna. So, like Dr. Usma said very rightly, that nowadays the adolescents have become the digital netizens. So, this is no secret that the adolescents are loving social media. But social media is just a tool. Now, how you use that tool depends on whether it is going to enhance our mental well being or it is going to impact our mental and emotional health. So, let us first understand how much we are using it and how is it impacting us and what are the signs of what are these signs which will let us know that the child is actually under the impact of social media. The very first thing which I can tell you is that if you see that the child is hours together on online, तो बच्चा यदि घंटों घंटों तक मीडिया यूज कर रहा है और बाकी उसकी सारी एक्टिविटीज थॉटेड है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बाहर खेल कूद नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है दूसरों से, तो ये पहला साइन है. Next slide please. Yeah. The second thing is that the child will be distracted. तो complete distraction रहेगा बच्चे का and would not be able to focus on the task given, assignment given, homework would be incomplete, these things would be there. बच्चा irritated रहेगा. Also बच्चा क्या जब 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 भी वो उदास फील करेगा, जब जब भी एंजाइटी फील करेगा, उन इमोशंस, ये जो कि अनहेल्दी इमोशंस हैं, उनको मास्क करने के लिए बच्चा और ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करेगा. तीसरी चीज जो मेरे को लगती है कि बच्चा विड्रॉ कर जाता है जब उसकी ट्रोलिंग होती है. ट्रोलिंग का मतलब है जब नेगेटिव कमेंट्स मिलना शुरू होते हैं आपके, एक्सेसिव जब आप ऑनलाइन आप जब हैं or maybe you are being cyber bullied, that is the time when the child withdraws, become aggressive or gets agitated. Also, other than this, if you find there is an increase in depression, if there is an increase in anxiety, or the child starts feeling lonely, that is the time when you understand, okay, the child is under the impact of social media. अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाउ द मेंटल हेल्थ इज इम्पैक्टेड. So the very first thing which I would like to talk about is perceived social isolation. इसका मतलब है what I am feeling. So despite adolescents being on various platforms, whether be it Facebook, you have n number of friends, बहुत सारे friends हैं आपके Facebook पे, आपको बहुत सारे लोग इंस्टा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं. अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका है सोशल कंपैरिजन. सो बेसिकली हम इस फिनोमेना को कहते हैं कंपेयर एंड डिस्पेयर, यानी हम अपने आप को अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड्स की पोस्ट से. उन्होंने अब वो सारी चीजें जो पोस्ट कर रहे हैं वो तो हाईलाइट रील्स है, यानी उनका बेस्ट मोमेंट उनकी लाइफ का. तो बच्चा क्या सोचता है? बच्चा तो यही देख रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें सब लोगों ने डाली हुई हैं, तो ही और शी स्टार्ट्स थिंकिंग, ओ आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट, maybe I'm not that cool, others are doing better, they are achieving so much. तो
तो ये सारी जब comparisons बच्चा करने लगता है, तो no doubt the child has got starts feeling doubt on themselves, और सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस लेवल पे फर्क पड़ता है, और बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है या एंजाइटी फील करने लगता है। और ऑब्वियसली इसका इसी से रिलेटेड जो फिनोमेना है वो फोमो है, पर उससे पहले मैं लैक ऑफ स्लीप की बात करना चाहूंगी। तो लैक ऑफ स्लीप अगर आप देखेंगे कि आजकल हम लोग भी पूरा ही टाइम, बच्चों की क्या बात करें, वी आर ऑल द टाइम ऑन द सोशल मीडिया। Same thing I have observed. Parents, when they come for counseling, they often complain that the children are, even before sleeping, they are using their mobile phones. तो क्या होता है, बच्चे को 9 घंटे की, खास तौर पे एक टीनेजर को बहुत जरूरी होता है 9 घंटे सोना, पर जब बच्चा सोशल मीडिया यूज करता है तो लास्ट टाइम पे चलो ठीक है एक बार और एक पोस्ट देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गया, व्हेन वी आर देयर, तो जो ब्लू लाइट एमिट होती है इन गैजेट से, वो आपके स्लीप वेक साइकिल को डिसरप्ट करती है, हमारी इंटरनल बॉडी साइकिल को, और उससे क्या होता है, हमारा पूरा दिन अफेक्ट होता है। We start feeling irritated, we feel lack of energy, and obviously क्या कहना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट डे भी अफेक्ट हो जाता है। और नॉट ओनली दिस, जो ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी से सिक्रीट होना चाहिए कंप्लीट डार्कनेस में, इवन वो भी नहीं, इट इम्पैक्ट्स आवर ग्रोथ ऑल्सो। Now let me talk about FOMO. So Dr. Ranjan sir has also talked about FOMO. So FOMO is fear of missing out. तो बच्चा जब अपनी फ्रेंड्स की पोस्ट देखता है, तो भले ही वो अपने ग्रुप में है, पर वो देखता है अचानक एक पोस्ट आई, पिक्चर आई है जिसमें द फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग एट होटल ताज, so they are enjoying the dinner at hotel Taj, and the child is already with his another set of friends, but then he starts feeling anxious. Oh my god, they are enjoying so much and I'm left out here. So this is one thing. Then obviously just related to too much of usage is sedentary lifestyle and lack of energy and weight gain. Other than that, already I have talked about depression and anxiety because of the social comparisons we do make on the post we see. Now I would like to talk about online addiction. अब ऑनलाइन एडिक्शन यानी जैसे सर ने भी पहले बताया था कि जब हम 3 घंटे से ज्यादा एक्सेसिव जब हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, तो क्या होता है, हम जब जब भी हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जब जब भी हमारी पोस्ट के ऊपर कोई लाइक आ रही है, यदि कोई हमारी पोस्ट को शेयर करता है, पॉजिटिव कमेंट देता है, तो हम हमारे ब्रेन के लिम्बिक जो सिस्टम लिम्बिक सिस्टम है, वहां का जो बेसिकली वहां पे जो रिवार्ड सेंटर है वो एक्टिवेट या स्टिमुलेट हो जाता है, और हर उस लाइक पे, हर उस नोटिफिकेशन पे हमारे ब्रेन में से न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, वो रिलीज होने लगता है। डोपामिन इज नथिंग बट फील गुड हार्मोन। सो वी स्टे हुक्ड ऑन आवर गैजेट्स ऑल द वेरी मोर, तो हम कॉन्स्टेंटली एडिक्टेड हो जाते हैं हर उस नोटिफिकेशन के लिए, जस्ट लाइक व्हेन we are eating chocolate, or when we are gambling, when we get some money through some lottery, the similar way we get addicted to these gadgets. So this is one thing. Then I'll like to talk about cyberbullying or online harassments which happen. So basically children don't come to know ki who is the person next to them, because there is a facade, or there are some predators online. तो वो अपनी आइडेंटिटी को फेक करते हैं, और कई बार इवन हमारी पिक्चर्स विदाउट हमारी परमिशन के दे यूज इट, एंड एट टाइम्स दे ब्लैक इट. So child may get into the under this impact also, and may get harassed. Now I would like to talk about body dysmorphia. Now what does body dysmorphia mean? इसका मतलब हमारी बॉडी इमेज को लेके हम परेशान हो जाते हैं, और ये होता क्यों है? बेसिकली इंस्टाग्राम इज अ वेरी इमेज ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, और जब हम इंस्टा पे देखते हैं वो क्या कहना चाहिए कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे को पोर्ट्रे किए जाते हैं, वैसी ही इमेजेस हमें बार बार, और ये हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं देख रहे हैं, हम अपने उन फ्रेंड्स को देख रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक अस, but they are putting their best of filtered photographs, and we start feeling, oh my god, they are so perfect, so beautiful or hot, whatever, but I'm not like that. And then मेरे को अपनी बॉडी में फ्लॉ नजर आने लगता है, oh my god, my nose is not perfect or my jawline is not that great. तो ये सारी चीजें जो है
ये बॉडी डिस्मोर्फिया या बॉडी का डिस्टॉर्शन हमें which is not there, but we start perceiving. Many day to day, I get so many calls, and I counsel such children who are getting impacted. And this also leads to eating disorders. तो या तो बहुत ज्यादा खा के फिर पर्ज करना, यानी कि उल्टी कर देना, या फिर खाना ही नहीं. तो इस तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे अंदर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो एस्टीम फील करना. जब हम पूरा टाइम इन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं तो हमारा जो इमेज है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, वो शेक हो जाता है. So like this, our emotional and mental health gets impacted. Yeah. Thank you so much, Dr. Dharna, for bringing out these important points. सबसे पहले जब आपने शुरुआत की अपने डिस्कशन की, तो आपने जिक्र किया कि ये हम पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. क्या हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं? Are we channelize our energy in the right direction? Then you also mentioned about a very significant topic that we need to address. It's about trolling or cyberbullying. Then of course it has a huge impact on mental health, and above all, this constant feeling of comparison or the negative competitive feeling among the adolescents कि उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा अच्छे आए, या वो व्यक्ति आज मुझसे ज्यादा अच्छे मुकाम पर है. And rightfully you also pointed the difference between the real and the real life. You mentioned about one of the social media platforms that is very popular for showing your image, but at the same time we don't know what is happening in the personal life of a person. Whatever they are displaying on screen might not be the same in their personal life. So thank you so much for bringing out these points. Moving forward in the discussion, as we are talking about peer pressure, coping strategies among adolescents, so it is very important to know about peer group. मतलब सही मायने में peer group क्या होता है, and how social media leads peer pressure among adolescents. For that guidance, I would like to invite Dr. Seema in the conversation. Thank you, Simran ma'am. Let us first understand what is peer group. आखिर ये peer group होता क्या है? It is nothing but a social group. यहाँ पे it's a primary group of an individual that shares the common characteristics. Be it a similar age group हो सकता है, या similar interest वाला हमारा कोई group हो सकता है, उसे हम peer group कहते हैं. Now a person, an individual can be member of a multiple peer groups. हो सकता है कि आप जब स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, so वहाँ पे आपके क्लासमेट्स आपका peer group बनाए. अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो या आपकी कोई स्पोर्ट्स टीम है, so आप उसके भी मेंबर हो सकते हो. इफ यू आर मेंबर ऑफ एनी काइंड ऑफ अ क्लब, साइंस क्लब और कोई भी क्लब की अगर आप मेंबर हो, तो वहाँ पे भी आप उस पर्टिकुलर सेटअप के peer group हो सकते हो. इस तरीके से why peer group is essential और peer group किस तरह से फंक्शन करता है. peer group होना because it influences the individual, उनके behavior को, उनके belief system को peer group जो है वो बहुत influence करता है. Again, it might influence in a positive way or it might influence in a negative way. अगर हम यहाँ पर बात करें कि अच्छे तरीके से ये फंक्शन करने में कैसे हेल्प करेगा. So obviously when you are interact with your peers, आप peers से जब interact करते हो, आपका social interaction बढ़ता है, आपके social skills develop होते हैं, be it a leadership skills और किसी भी चीज में, जैसे डेवलपमेंट की उज़मा मैम ने बात की थी, आपके बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हैं. यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ सेल्फ इमेज. आपके जो सेल्फ इमेज क्रिएशन में आपका पीयर ग्रुप हेल्प करता है. यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ. यू अंडरस्टैंड लाइक आपकी जो स्ट्रेंथ है, गुड पॉइंट्स हैं, उनको आप समझते हो, आपके रोल्स को समझते हो. व्हेन यू इंटरेक्ट विथ योर पीयर ग्रुप, they also teaches you the gender roles and they help for the social and emotional development of an individual. Again, एक collective behavior निकल कर आता है. peer group से जब हम interact करते हैं, तो कहीं बार we are able to manage the conflicts among ourselves और problem solving या critical thinking की skills जो है वो यहाँ से develop होती है. Now, peer group can influence or impact in a two way. It could either be impact in a positive way, जिसे हम पॉजिटिव पीयर प्रेशर कहते हैं, या ये एक नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है. नाउ किस तरीके से पीयर ग्रुप पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है? सो द एग्जांपल्स कुड बी लाइक यू ऑल कैन पुश अ फ्रेंड टू स्टडी हार्ड टू गेट अ गुड मार्क्स. अगर एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो हमारा पीयर ग्रुप हमें स्टडी सर्कल बनाने में मदद कर सकता है, या हमारे एग्जाम्स में गुड मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है. Again, it could also help us to disapprove
the kind of a things like gossiping, unnecessarily gossip ना करना या कुछ productive काम करना ग्रुप्स में रहकर, इस तरीके से ये positively influence कर सकता है. It could discourage us from indulging in any illegal activities, और let's say ये हमें अपने strength को identify करने में help करते हैं. They can encourage us, they can give us a positive advices, they can motivate us, और इसी तरीके से socialize करने में मदद करते हैं. साथ ही साथ they can set a good modeling example. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे, इससे हम एक ये पॉजिटिव पीयर प्रेशर का एग्जाम्पल है जिससे इंसान का डेवलपमेंट ही होगा. लेकिन अगेन यही ग्रुप आपको नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट इन्फ्लुएंस यू ऑल टू बंक और स्किप अ क्लास और अ स्कूल, और मे पुश यू टू बाय समथिंग जो आप नहीं खरीदना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो. ऐसी कुछ चीजें आपको लेने पर मजबूर करे, या फिर हो सकता है कि आपको प्रेशराइज करे टू इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ रिस्की बिहेवियर, या ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाए जो आप नहीं करना चाहते हो या आप नहीं प्रेफर करते हो, बट टू बी एक्सपेक्टेड या उस ग्रुप में फिट होने के लिए यू इंडल्ज इनटू दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो आइडियली आप नहीं करते एट अ फर्स्ट प्लेस, बट सिंस योर होल पीयर, योर होल ग्रुप इज डूइंग इट, यू ऑल्सो गेट इंडल्ज इनटू द थिंग्स. और दिस में नेगेटिव पीयर प्रेशर से हो सकता है कि आप किसी को, आपको मोटिवेट करे किसी को बुले करने के लिए. सो ये नेगेटिव पीयर प्रेशर का एग्जांपल्स हैं. नाउ हाउ सोशल मीडिया विल इन्फ्लुएंस दिस पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर सोशल मीडिया के आने से एक वर्चुअल पीयर प्रेशर क्रिएट हो गया है, एंड दैट वर्चुअल पीयर प्रेशर is basically यहाँ पे सोशल मीडियाज के जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स करते हैं, आपको लगता है कि आपको भी वो चीजें करनी चाहिए. सो ये इस तरीके से वर्चुअल पीयर प्रेशर जो है वो सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दिया है. बी इट इज लाइक पोस्टिंग, योर फ्रेंड्स आर पोस्टिंग सम और द अदर थिंग्स, अपने इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, या अगर वो कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो उनके पिक्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगेन ड्रिंकिंग एंड इंडल्जिंग इनटू टेकिंग ड्रिंक्स एंड अल्कोहल या स्मोकिंग करना, ये बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बिकॉज इस तरह की पिक्चर्स वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, एंड इससे जो दूसरे टीनेजर्स हैं उनको लगता है इट इज वेरी कॉमन. अगेन लेट नाइट पार्टीज वगैरह की फोटोज डालना, तो जहाँ पे नॉर्मल इंडिविजुअल है जो उसका पार्ट नहीं है, सो उसे लगेगा कि आई एम मिसिंग आउट इन द सेलिब्रेशन. एंड ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं द फियर ऑफ फोमो, जिस तरीके से कहा गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट उसमें रहेगा. आप कहीं बार सोशल मीडिया में बहुत सारे अपने डिटेल्स अपडेट करते हैं, आप कीप ऑन अ लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिव आप टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे आउट ऑफ पीयर प्रेशर. इफ योर फ्रेंड इज ऑनलाइन, यू विल ऑल्सो स्टे ऑनलाइन टू कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स. सो अगेन फैशन है, क्लोथिंग है, व्हीकल्स हैं, मोबाइल फोन के जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं, मेरे फ्रेंड ने पोस्ट किया है, उसे गिफ्ट दिया गया है. सो आपको लगता है कि अगेन इफ समवन इज पोस्टिंग, तो आपको लगता है कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी एक्चुअली. ये सच में रियलिटी नहीं होती है. नोबडी पोस्ट देयर फेलियर्स ऑन सोशल मीडिया. कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने फेलियर्स को पोस्ट करेगा, राइट? सो इस प्रेशर में आकर बच्चे भी ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, चाहे वो पोस्टिंग हो, अनप्रोडक्टिव वेस्ट ऑफ टाइम हो. सो समवेयर डाउन द लाइन social media also influences, or because of the peer pressure you make use of social media a lot. Over to you, Simran ma'am. Thank you so much for coming up with those important points, and very rightfully you mentioned about the statement you just said that nobody comes up with their failures on social media. We all need to understand that it's just the good life and the success stories that we compare ourselves to as compared to another person's. Then also you have come up with some significant terms that were even new to me, like virtual peer pressure. What is it, and how social media adds more to that? Then we can see that there are two different types of peer pressure. मतलब peer pressure के भी अपने दो आयाम हैं, जैसे positive peer pressure है, negative peer pressure है. It could also help us in learning a lot
at the same time it could also be a bit distasteful for all of us. तो जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया का यूज क्या होता है और सोशल मीडिया का अब्यूज क्या होता है. And throwing more light on that, we have with us Dr. Usma Nazir in the conversation. Ma'am, I would request you to please apprise our viewers about the use and abuse of social media. Yes, sure. Thank you again. So I'll be talking again about the uses and abuses of social media, right? So कैसे एक इंसान के जीवन में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते, कैसे उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हम उस बारे में जानेंगे. So basically अगर हम देखेंगे uses of social media, we can have, sometimes we talk about the literacy skills. Literacy skills enhance होती है by using the social media. अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, we through social media हम literacy skills enhance करते हैं. We enhance reading skills, we enhance communicative skills, we enhance numerical skills, या बहुत pronunciation skills are there. We are enhancing these by using the social media. Although बहुत सारी platforms available है online भी, जिनके through हम क्रिएटिविटी या लिटरेसी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे आजकल के दौर में हमारे पास बहुत सारे एकेडमिक राइटिंग के कोर्सेज है, सो हम उनको यूज कर सकते हैं ताकि जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हमारी राइटिंग स्किल्स में बड़ा ही इम्प्रूवमेंट आ सकता है. अगर हम दूसरी स्किल्स की बात करेंगे, बेनिफिट्स, क्रिएटिव बेनिफिट्स की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू हम बड़े क्रिएटिव बेनिफिट्स भी देखते हैं आजकल के बच्चों में. अगर हम देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, उसमें बहुत सारी फ्री प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी फ्री कोर्सेज होते हैं जहाँ पे हम एनरोल हो सकते हैं और हम अपनी थिंकिंग को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वेज है वहाँ पे हमें एनकरेज करते हैं, जो हमारी नई सोच, हमें एक नई चीज सोचने पे मजबूर करते हैं. सो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सारे क्रिएटिव बेनिफिट्स भी होते हैं. बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म भी है, शोकेस करते हैं हम स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को हम वहाँ पे. तो अगर हम देखेंगे वहाँ पे, अगर हम नोट करेंगे बहुत सारे टैलेंट्स तो हम आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं. बहुत सारे टैलेंट्स आजकल डिस्कवर होते हैं थ्रू सोशल मीडिया. सो डेफिनेटली इट हैज एनहांस्ड द क्रिएटिव बेनिफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर हम सोशल स्किल्स की भी बात करेंगे, वी हैव अनदर स्किल सोशल मीडिया दैट्स हेल्पफुल, दैट इज सोशल स्किल्स. अगर हम सोशल स्किल्स की भी बात करेंगे, सो इट रियली सोशलाइजेस द पीपल, राइट. सोशल मीडिया से हम सोशलाइज लोगों के साथ हो सकते हैं, वी कनेक्ट पीपल टू द पीपल. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे ये एक वर्चुअल मोड जो है ना, यहाँ पे इजी एडजस्टमेंट होती है लोगों की, बहुत इजी एडजस्टमेंट्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कोई बच्चा बड़ा ही क्रिपल्ड है, बड़ा ही स्टैमरिंग है उसमें, या कोई भी हैंडीकैप्ड है, तो वहाँ पे वो सारी जो चीज़ें वो बड़ी कंसील रहती है उनके एस्पेक्ट में, और उससे क्या हो जाता है वो इजी एडजस्ट होता है दो लोगों के साथ. वो भी जो कोई इंट्रोवर्ट होता है वो भी अच्छे से इंटरेक्ट करता है थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, राइट. या अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे, वी हैव रियल टाइम एक्सेस. दिस इज रियल टाइम एक्सेस. अगर हम बात करेंगे तो हम ये जो सोशल मीडिया, ये बड़ा क्लोजल मीडिया है, और इससे क्या होती है हमारी जिंदगी बड़ी सरल हो गई, बहुत ही आसान हो गई है इस माध्यम के थ्रू. अगर हम देखेंगे हम बहुत सारे लोगों के साथ एक ही इन अ जिफी वी कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, हम एक दुनिया के साथ एक टाइम पे जुड़ सकते हैं. और अगर हम देखेंगे विदाउट एनी, मतलब वी डोंट हैव टू एनी कन्वीनियंस, हमारे बहुत ही कन्वीनियंट वे होता है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, हम एक समय पे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, या हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इस माध्यम के थ्रू भी. Again, it has widened the scope of online learning. If I talk about, during the pandemic, it was really helpful. Pandemic के दौरान भी अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया बड़ा ही helpful रहा है for gaining the success, for encouraging the students, या for gaining the academic excellence among the students. So online teaching learning में भी बहुत improvement आई है through social media. Otherwise prior to COVID हमें पता ही नहीं थी how to connect with the people, how we can talk through social media about the teaching and learning processes. So बहुत सारी apps भी आ गई. अगर हम देखेंगे Teachment app है, Wise app है, बहुत सारी apps है. अगर हम देखेंगे social media के थ्रू हम जुड़ पाए बहुत सारे बच्चों के साथ और उनका academic career में भी enhancement हो गई.
So I can say these are the some uses of social media. अगर हम बात करेंगे now I can talk about abuses of social media. Every I can say मतलब हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, यूजेस भी है, अब्यूजेस भी है. तो हाउ अब्यूजेस क्या क्या है सोशल मीडिया के, अगर हम देखेंगे साइबर क्राइम्स आर देयर, there's online harassment is there. For example, अगर हम साइबर क्राइम की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है. हमारे पास साइबर बुलिंग आ जाती है, there's आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाती है, या स्टीलिंग आइडेंटिटी की हम बात कर सकते हैं, वो भी इस चीज में आ जाती है. अगर हम देखेंगे डेटा ब्रीच भी हो सकता है बाय यूजिंग द सोशल मीडिया, या इनफैक्ट अगर हम देखेंगे साइबर एक्सटॉर्शन भी हो जाते हैं. सो बेसिकली ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन लीड टू द साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स. ये हमें कहीं ना कहीं एंजाइटी की ओर प्रमोट करते हैं, डिप्रेशन की ओर प्रमोट कर सकते हैं, या इनफैक्ट ट्रेजिकल सुसाइड्स भी होते हैं इसके माध्यम से. मतलब अगर हम अगर हम इसकी अब्यूजेस की बात करेंगे, ऑल द नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर के भी बारे में अगर हम देखेंगे, इसमें बहुत सारी, अगर मैं धारणा मैम ने भी अभी बताया कि अगर हम देखेंगे बार बार बच्चा आज क्या करता है, वो उठ के देखता है कि रात को भी उठ के देखता है अपने सोशल मीडिया एप्स को. सो डेफिनेटली वो तो स्लीप डिप्राइवेशन वहाँ पे भी हम देख सकते हैं. डेफिनेटली जब स्लीप डिप्राइवेशन होती है, वो पूरे दिन में इफेक्ट दिखता है उसमें हमें. या आईसाइट्स की हम बात करेंगे, या मैंने अभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की भी बात की, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या सुसाइड्स है. It leads to some extent these kinds of disorders. या अगर हम देखेंगे इस माध्यम से सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं हमारी सोशल रिलेशनशिप्स पे भी बड़ा ही इम्पैक्ट डाला है. हम आजकल वर्चुअली कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो हमें सामने वाले लोग होते हैं उनके बारे में हम बहुत ही कम जान जाते हैं. सो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है ड्यू टू द सोशल मीडिया. हमें पता ही नहीं होता है कि सामने वाला बंदा क्या क्या कर रहा है. हमारे सामने जो इंसान है उनके बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन जो हमसे बहुत दूर होते हैं उनके बारे में हम सब चीज़ें जानते हैं. सो बेसिकली अगर हम देखेंगे क्लोज रिलेशनशिप्स, वर्चुअल रिलेशनशिप्स एनहेंस हो गई, लेकिन जो फिजिकल रिलेशनशिप्स है उनमें कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम्स आ चुकी है. या डिस्टॉर्टेड रियलिटी की भी अगर हम बात करेंगे, तो एक इंसान अपने आप को कुछ और दिखाता है और वो कुछ और होता है. अगर हम फिजिकली सेंस भी करेंगे इस चीज को, ही इज टेकिंग अ फोटोग्राफ यूजिंग सम स्नैपचैट्स या कोई भी फिल्टर डाल के अपनी फोटोज लेता है, उसकी जो रियलिटी है डिस्टॉर्ट हो जाती है. वहां पे वो अपना एक और सेंस दिखाता है, और जो वर्चुअल और रियलिटी में जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट एक इंडिविजुअल होता है. सो दिस इज हाउ वी सोशल मीडिया हैज रियली इम्पैक्टेड इन अ नेगेटिव वे. अगर हम एक और चीज के बारे में भी जानेंगे, डिप्रेशन, हमने तो सुना ही था डिप्रेशन होता है, लेकिन अब तो कॉमन टर्म आ गई है फेसबुक डिप्रेशन. फेसबुक डिप्रेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो नई नई आई है. सो बेसिकली अगर हम कोई चीज अपलोड करते हैं, एडोलेसेंस जो होते हैं वो कुछ चीजें को अपलोड करते हैं, तो उसके बाद वो उसकी लाइक्स देखते हैं, बार बार देखते हैं उसकी लाइक्स कितनी आ गई, या इंस्टाग्राम में कोई चीज अपलोड कर दी, कितनी लाइक्स आ गई, कितने लोगों ने देखा, कितनी व्यूज आ गई. तो अगर किसी बच्चे को ऐसा देखते हैं कि लाइक्स कम आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें लाइक्स नहीं आ रही है उसको, या कोई चीज समझ नहीं आ रही लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता, तो दैट लीड्स टू द डिप्रेशन अमंग द इंडिविजुअल्स. तो ये कुछ कारण थे अगर हम देखेंगे अब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया. अगर मैं इस चीज को पॉइंट आउट करूं, अगर, तो आई थिंक मतलब सोशल मीडिया जो है ये एक्चुअली अगर हम देखेंगे डबल एजेड स्वॉर्ड है. It's a double-edged sword. It has positive impacts, it has negative impacts. So with that note, I complete my talk. Yeah, thank you so much, ma'am. इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में आपने बात की. Just taking the key takeaways from your discussion, you mentioned about how social media could be used in a positive manner, basically by learning different skills, whether we talk about literary skills or writing skills, the creative benefits that one could get from social media. Then we can also discover different types of talents on social media. We have had those examples in front of us. Then social media has obviously made our lives easier, and as you rightly mentioned that every coin has two sides, so there are certain benefits and disadvantages followed by it, and it has actually
people has learned to connect with the help of social media and more during the COVID time. So thank you so much for that. Just a slight information for all our viewers. In this conversation, we still have around 35 minutes left. I would request all the panelists to please be precise with their presentation. Apart from that, viewers, if you have any of the questions, any queries, feel free to reach out to us in the comment section of NCERT Official. Now, leading the discussion forward, one of the और रात को जब हम सोने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि एक और पोस्ट देख लेते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा और कर लेते हैं. Now we all don't know that how it accounts in the addiction of social media. Now what could be the certain preventive measures to avoid addiction of social media? And providing us some more guidance on the subject, we have with us in the conversation Dr. Ramesh Kumar. Dr. Ramesh. Thank you, ma'am. Thank you, Simran, ma'am. So I think this is the most sought after question. Like most parents ask us, most parents must be asking all the counselors कि अब क्या करें, बच्चा एडिक्ट हो गया तो क्या करें. तो सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन, जैसे धारणा मैम ने बता दिया कि कुछ इसमें बायोकेमिकल फैक्टर्स भी हैं. ये है क्या बेसिकली, व्हाट मोबाइल और सोशल मीडिया एडिक्शन जो है क्या? This is basically problematic use of social media which influences other aspects of our life. जब मेरी वर्क लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ उस इम्पैक्ट होने लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई है. जब मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ, जब मुझे विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मुझे एंग्जाइटी होती है जब मुझसे कोई सोशल मीडिया या मेरा फोन जो है वो कोई लेता है, जब मेरी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है स्पाउस के साथ या बाकी वालों के साथ, जब मुझे फोन नहीं मिलता, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे जो है सोशल मीडिया की एडिक्शन जो हो चुकी है. अब एडिक्शन के कारणों को, एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एडिक्शन के कारणों को समझना बहुत जरूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी गेट एडिक्टेड. पहली बात, एडोलेसेंस एडिक्ट होते हैं बिकॉज वो इम्पल्सिव हैं, उनको आइडेंटिटी चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए. दे मे बी लुकिंग फॉर लव और सोशल सपोर्ट. सो क्या हमारी सोसाइटी में ये चीजें मिसिंग है? क्या सोशल सपोर्ट मिसिंग है? क्या उनकी सेल्फ एस्टीम कम है? क्या उनको ज्यादा रीएश्योरेंसेस ऑनलाइन या सोशल मीडिया से मिल रहे हैं? सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर गेटिंग एडिक्टेड? सोशल मीडिया, उसमें मैम ने बताया कि लाइफ स्किल्स देता है, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या मेरे में लाइफ स्किल्स की कमी थी, तभी मैंने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जगह सोशल मीडिया को चुना. तो जब हम कारणों को समझेंगे, when we understand what are the reasons for social media addiction, then we can prevent it also. अब मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो इसलिए मैं एडिक्टेड हूँ. तो डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी, आप सबने सुना होगा. इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल था उसको निकालने के लिए हुई थी. बट आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया ने हमें कितना अनवांटेड जो क्लटर है वो दे दिया है, ताकि हमें डिजिटली भी डिटॉक्स करना पड़ रहा है. आई हैव हर्ड दिस टर्म, पीपल एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भी दूर रहते हैं सोशल मीडिया से. अब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज की जो हम या हमारे बच्चे जो है वो अपना सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन को कम करने के लिए. हर एक का रोल है, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल मेरा अलग रोल है, पेरेंट्स का अलग रोल है, पॉलिसी मेकर्स का अलग है, एम्प्लॉयर्स का अलग है, एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट का. सो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर टू स्टॉप दिस मैनेज ऑफ एडिक्शन, बिकॉज वी वांट आवर चिल्ड्रन टू लिव इन रियल लाइव्स, नॉट इन वर्चुअल वर्ल्ड. सबसे पहले बच्चों जो आपके फोन में अनवांटेड हैं या बड़े भी जिन अनवांटेड जो हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डिलीट करें. सपोज हमने सोशलाइज करना है तो ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, स्नैपचैट भी है, बाकी सारे हैं. तो जो नहीं आप यूज करते बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, प्लीज डिलीट देम. देन सेट ए लिमिट कि आपने आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद चेक करना है. नॉट चेक योर नोटिफिकेशंस इमीडिएटली. फिर एक चीज हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी mute our notifications, because every time the notification comes we are tempted to look into, then we lose track of the time because social media से हम addicted हो चुके होते हैं. तो हम अगर उसको mute करके रखते हैं तो this is one of the ways we can control our social media addiction. Then having a period, जैसे मैं blackout रहता हूँ, आज मेरा weekend पे मेरा Saturday को जो है वो social media blackout रहेगा, मैं कुछ नहीं चेक करूंगा, या working hours में मेरा blackout रहेगा. तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं.
देन वी हैव सर्टन एप्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, जैसे मूवमेंट है, फॉरेस्ट है, वो सारी एप्स हमें रिमाइंडर देती रहती हैं। इवन नॉर्मल गैजेट के पास भी एक ऐसी सेटिंग्स होती है जो हमें रिमाइंडर्स देती हैं कि आपका इतना टाइम हो गया। और कुछ एप्स ऐसी हैं जो ब्लॉक कर देती हैं सोशल मीडिया को, कि उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। आयरनी थोड़ी सी ये है कि हम सोशल मीडिया कंट्रोल भी एप्स के थ्रू कर रहे हैं, बट यस ऑफ कोर्स वी कैन control through these apps also. Then coming to the next slide, other stakeholders which have a role to play. For example, me as a parent, आगे धारणा में हम बात करेंगे, पेरेंट को रोल मॉडल होना पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को खुद फोन में फिजिट करता हुआ बोलूंगा कि बच्चे आप नहीं करो, तो ऐसा नहीं होगा। वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर अर्जेस, आवर डिजायर्स, आवर एस्पिरेशंस आल्सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट आवर किड, बिकॉज चिल्ड्रन लिसन लेस एंड वॉच मोर, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देन स्टिमुलस कंट्रोल हम इसको कहते हैं, कि फोन ही नहीं है तो एडिक्शन या कैसे होगी। सपोज मैं मार्केट में जा रहा हूँ, फोन घर में छोड़ के जाओ, लिस्ट फिजिकल लेके जाओ। सपोज मैं वर्क प्लेस पे हूँ तो फोन किसी और ड्रॉअर में रख लो, उसको कर लो। तो दिस इज स्टिमुलस। बेडरूम में नहीं रखो, डाइनिंग टेबल पे नहीं रखो। तो अवेलेबिलिटी जब नहीं होगी तो डेफिनेटली स्टिमुलस कंट्रोल से हम एडिक्शन को बहुत कम कर सकते हैं, कि उस सोशल मीडिया जो जिसमें फोन में है उसको हम अवेलेबल कम कराएं। उसके बाद हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कटिंग आउट माई सोशल मीडिया टाइम, बट दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड विद अ हॉबी, विद अ फिजिकल एक्टिविटी, विद अ सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद सोशल, ये बड़ी छोटी सी बात है, एवरीबडी वेक्स अप विद अलार्म क्लॉक, नॉट अलार्म क्लॉक जो सेपरेट होती है, हम अपने मोबाइल फोन के अलार्म क्लॉक से, फिर उसमें नोटिफिकेशंस होती है, फिर हम वो चेक करते हैं। इन ए सेंस वी बिगिन आवर डे बाय चेकिंग आवर नोटिफिकेशन, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बड़ी छोटी सी एक टिप देते हैं साइकोलॉजिस्ट की, अलार्म क्लॉक आप अलग से खरीद लीजिए, फोन को अलग से रख लीजिए, 9-10 बजे उसको स्टार्ट कर दीजिए चेक करना, फिर हमें काम याद आ जाते हैं। तो using a separate alarm clock, then wrist watch, many times we check our phones for just seeing the time. So wrist watch can replace this time checking, हमारी जो हैबिट है, तो ये रिप्लेस होगी। तो फिर हम फोन को तभी करेंगे जब कोई बीप होगी या फोन आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। देन डिजिटल लिटरेसी में मुझे लगता है कि शायद हमारे यंगस्टर्स या टीनेजर्स जो हैं, दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया। आज अगर वो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत पता चला होगा। तो ये हमें फियर अपील्स उनको देनी है कि किस तरह के मेंटल, फिजिकल, हमारी आई साइट पे, हमारी मोरालिटी पे, हमारी अदर इश्यूज कैन बी कॉम्प्रोमाइज। तो अगर डिजिटली हम लिटरेट करेंगे अपने यंगस्टर्स को, इवन एडल्ट्स को, दिस इज वन ऑफ द वेज वी विल रिफ्रेन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड वी कैन अवॉइड सोशल मीडिया जो डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद जो भी आप करें उनको इंक्रीमेंट्स में करें। इंक्रीमेंट्स मतलब यू वांट टू स्टॉप एडिक्शन व्हिच हैज कम अप टू ए लेवल, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके, सपोज यू आर यूजिंग इट फॉर 3 hours या 4 hours, so you can cut it for 1-2 hours, then 1 hour. तो small steps by the time, because when addiction or any complex behavior develops, तो वो थोड़े इंक्रीमेंट से स्टार्ट होता है। सिमिलरली आपको थोड़े इंक्रीमेंट से उसको ब्रेक करना है, and then respond on a fixed amount of times. अदर देन जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल चेकिंग सोशल मीडिया, हम जो कार्स में करते हैं उसको अच्छे से स्ट्रिंजेंटली उसको पनिश करना चाहिए। हमारे स्कूल्स में जैसे बैन होता है, तो कॉलेजेस में भी बैन अगर कर दिया जाए तो मे बी उससे एडिक्शन कम होगी, या कुछ पीरियड्स के लिए उन बच्चों को दे दिया जाए, या इमरजेंसी के लिए कुछ और। एक बड़ा क्रिएटिव सा मैं सोल्यूशन देख रहा था कि रेस्टोरेंट्स आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन द मील्स when somebody eats without having phone around. This idea is very beautiful. Eating के साथ तो फोन होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं। उसके बाद जो ये सोशल मीडिया वाले खुद हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक knows who is accessing the Facebook for which amount of time, they can issue warnings. वो छोटे बच्चों के लिए इस तरह की वार्निंग दे सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं अगर उनका टाइम जो है वो एक्सीड हो रहा है या टाइम जो है उनका ज्यादा हो रहा है। So these are few of the ways through which we can curtail our social media addiction. But at last I want to just add that all of us have to start collectively, because any person, especially teenagers, अगर वो addicted हैं तो उनको एक social support चाहिए, एक interpersonal support चाहिए। और अगर कोई बंदा ज्यादा addicted हो गया तो उसको therapy भी चाहिए, like
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स और सेटिंग उनको पता होगा, जिसमें हम थोड़ी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ठीक करते हैं, थोड़े बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ी उनको इंसाइट दिलवाते हैं। सिमिलरली मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ये भी एक काउंसलिंग की ही टेक्निक है, जिसमें एम्पैथी के साथ सुना जाता है, अपनी जो राइटिंग रिफ्लेक्स है इमीडिएटली एडवाइस देने वाली उसको बंद किया जाता है। बट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक थैंक गॉड कि जो सोशल मीडिया एडिक्शन है ये ना तो DSM-5 जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है जो साइकेट्रिक एसोसिएशन का उसमें भी नहीं है, और ना ही ICD में है। शायद गेमिंग डिसऑर्डर जो है वो आया है, तो इतना सीवियर नहीं है, बट ऑल ऑफ अस नो दैट it is impacting all aspects of our life, especially corona pandemic की वजह से. So seriously we need to work on curtailing the social media addiction of all the youngsters and even adults also. Thank you very much. जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। आपने बताया कि हाउ वी कैन, यू हैव एक्चुअली रेज्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर मोर prone or inclined towards using social media. Is there a weakness inside us? Then a term mentioned by you, that is digitally detox yourselves, delete the applications that you don't use, don't go or be tempted by the notifications every now and then. And some important strategies that were pretty interesting are using wrist watches instead of cell phone, just to have a look at the time, and eating without having phones around you. So thank you so much. Quickly, I would like to invite our next panelist in the discussion. Due to peer pressure related to social media. With that, I would also like to inform you that in this conversation, we are left by the last 20 minutes. Yeah, Dr. Seema. Thank you, Simran ma'am. Very rightly said by Dr. Robesh sir that there are very preventive strategies. Preventive strategies के साथ ही we also have some coping strategies to overcome the peer pressure that is related to social media. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें शायद हेल्प करे टू ओवरकम द थिंग. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हाट यू फील. अगर आपको peer pressure के out of pressure, if you are using something or if you are posting your pictures, so always or maybe any other thing, अगर आप peer pressure के अंडर हो, so you all can do one thing, you all can always pay attention to your feelings कि आपको उस वक्त कैसा लग रहा है. If you are not feeling good, you might not indulge in that thing. So ये हो सकता है. The second point could be like you need to plan ahead. आपको different scenarios में, कई बार different scenarios जो है students face करते हैं, और आपको उस चीज को थोड़ा सा plan ahead करना होगा कि इस तरह की situations अगर मेरे साथ होती है, so how I will be dealing with such kind of a situations. So इस तरीके से आपकी planning आपको help कर सकती है to deal with the situations those are critical. Again, you can communicate with your parents, with your trusted ones, जिसे भी आप trust करते हो, आप उनके साथ communicate कर सकते हो. If someone is pressuring you to be there continuously on social media, या फिर आप अगर नहीं चाहते हो, तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो टू कम आउट ऑफ इट, और एनी ट्रस्टेड पर्सन, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके काउंसलर्स हो सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम, दैट हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन. And also you all can talk to that person who is pressuring you. You can talk about your point of view regarding the same thing. Also it is very essential to understand कि जो चीज आपको नहीं पसंद है उसके लिए ना बोलना चाहिए. सो इट इज ओके टू से नो. अगर आप नहीं इंडल्ज होना चाहते हो कोई भी एक्टिविटीज में, या आप नहीं यूज करना चाहते हो, या आप अपना कोई भी अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, देन इट इज ओके टू से नो, और विद अ अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई यू डोंट वांट टू डू इट. सो एक कोपिंग स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, यू से नो डायरेक्टली. Also you all can get support from your trusted adults. जैसे मैंने कहा कि चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं. तो जब आपको लगता है कि ये बहुत एक्सीड हो रहा है and I am not able to cope up, then in such a scenario you all can always seek help of your adults, and जो भी trusted adults हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं. Thank you, Simran ma'am. Over to you. Yeah, thank you so much for those insights. You mentioned about the effective planning and the sequence that helps an individual to keep going
even in the hard or turmoil type of situations, and also communicating with the parents. Well, you mentioned about parents. With parents, teachers, community, they all have the honest, or they all bear this responsibility in supporting and resolving the issues of adolescents that are particularly related to social media. For that, I would once again like to invite Dr. Dhana in the conversation to apprise us about how family members, teachers, community can support adolescents in resolving the issues that are related to social media. One of the most important and pertinent questions of the session. Thank you. Thank you for having me again. So basically, the very first thing is we all know that social media is integral to us, which we have discussed at length by now. Now, the thing is, we cannot, the right way is not to be overprotective or restrict the media usage, which is not very possible because there are so many positive aspects to the usage of social media by the teens. It supports their development. Now, the point is, what we can do is we can just help them and show them the right path to use the social media. So, as an educator and as a parent, the very first thing which I feel is one has to be a role model. So, the way, if you can, just as we see in the picture, the child is just observing that the parents are there on the dining table and they are scrolling their own social media. So what do you think? What type of message is being given to the child? So the idea is practice what you preach. That is the very first thing I would like to say. Now, there are three things which I like to emphasize. The very first thing, as a parent, we need to be warm and supportive to the children. So we have to be open and non-judgmental. We just need to be curious. We need to ask we simply need to raise small questions with our children, like what type of come out of curiosity and just ask what type of social media handles you like to watch, or maybe you're a part of what type of activities you think are great happening there, what type of friends, what type of posts are being posted by your friends. What do you think? Is there some impact on your mental health, or do you think you're getting impacted in some negative way? So just be open and curious and just seek support from them also, just and you will be amazed to know that they may even know better than you. So the very first thing, be warm to them, be open, don't be judgmental. The second thing is have some controls. Be also firm when you are setting certain limits and you are disciplining them. So you be very clear about having age appropriate interventions. What I mean by age, so what type of social media platform the child should be in, that is very important. So and then what type of platforms you want your child to be getting in, that is also very important. Another thing which I feel is important is that another thing which I think is important is that we need to actually take care of because some children just put their locations on, which is also very dangerous. As a or as a parent, I need to be very particular about that. We should teach or we should educate the child that it is possible that the algorithms are also tracking our locations. So let's say that I have booked a ticket, मुझे गोवा जाना है, और उसके बाद मेरे फीड में बेस्ट रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीजें सोशल मीडिया मुझे दिखा रहा है, तो बच्चे को ये चीजें एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हमारा हर एक मूवमेंट, हमारी हर एक क्लिक, हमारा हर एक पोस्ट ट्रैक किया जाता है. सेकेंडली, हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. या कहने का मतलब कि जो कुछ भी कंटेंट हमने आज हमारे मीडिया में डाल दिया है वो हमेशा इट इज गोना बी देयर. As a teacher, I think it is important to tell the children that this is gonna stay forever. And ऐसे बहुत सारी universities हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी जिसने कुछ अपने स्टूडेंट्स को डिबार किया एडमिशन से, just because they saw some content on the social media which was not appropriate. So we have to be as educators, we can also keep a very close watch on the children. Any changes in their behavior, अगर आपको लगता है कि बच्चा withdraw कर रहा है, sad feel कर रहा है, तो just giving that in refer them out to a psychologist or a psychiatrist.
depending on what is right. Also telling them what type of data privacy, जो कि उस्मा मैम ने भी mention किया था, it is very important to teach them about data privacy. क्या चीजें हैं जो कि हमारे को पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इन सब के बारे में हम वी कैन हैव वर्कशॉप्स विद द टीचर्स और विद द पेरेंट्स एज वेल. तो सो दैट जो साइबर क्राइम्स जो होते हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो बच्चों का होता है, उस पे भी हम एक तरह से रोक लगा सकें. Another thing is we have to be polite. जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ दूसरे करें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हमें बच्चों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि we should not tag anybody without their permission. Other than that, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, कुछ इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स, हमारे वीडियोस, या बिना किसी की परमिशन के हम कुछ ऐसी चीज पोस्ट कर देते हैं. चिल्ड्रन शुड नो दैट इज अ लीगल ऑफेंस. As a educator, we should also teach our teens this thing. Other than this, मुझे लगता है कि पेरेंट के लिए, जैसे मैंने कहा था कि वार्म रहना जरूरी है और कंट्रोल और डिसिप्लिन करना जरूरी है, उतना ही जरूर उन्हें स्ट्रक्चर करना है. स्ट्रक्चर करने से मेरा तात्पर्य ये है कि जो ऑनलाइन यूजेज है वो कितनी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किस, जैसे आपका एक कॉमन हॉल होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चों को अलाउ करते हैं रहना, वहां पे वो जो भी करना चाहते हैं नेट वहां करें. और कौन कौन सी साइट्स वो सर्व कर रहे हैं, एज अ पेरेंट यू शुड हैव सम सुपरविजन इन प्लेस. यू शुड गो थ्रू द ब्राउजिंग हिस्ट्री सो दैट अगर उनके साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है या साइबर बुलिंग जैसा कुछ भी सिनेरियो है, तो यू कैन बी अलर्ट. एंड देयर आर साइट्स लाइक बिंग, जहाँ पे अगर आप सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड आप उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं तो आप उनको एक्सपोजर दे सकते हैं. पॉपअप्स जो हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं. अदर देन दैट, नाउ आई precisely talk about the community interventions which we can give to our children. So simple सी projects होते हैं जो कि community service projects हैं, जहाँ पे बच्चे participate कर सकते हैं. बच्चा किस particular area में impact करना चाहता है, उससे related वो fund raise कर सकता है. For example, छोटी सी एक example है, हो सकता है कि बच्चा underprivileged बच्चों को as a mentor connect करना चाहे, उनको teach करना चाहे. और ओल्ड एज होम्स हो गए, शेल्टर्स हो गए, एनिमल शेल्टर्स हो गए, या ऑर्फनेजेस हो गए, वहां पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकता है. या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स हो गई या गेट टुगेदर्स हो गए, वहां पे छोटे छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे और कुछ भी नहीं तो चेयर्स इकट्ठे कर देने और सर्व करना फूड को, ये सारी चीजें कर सकते हैं. ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऑल्सो जो बच्चे हैं उनको कम्युनिटी से जोड़ने के लिए जो भी हमारे पास कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं, भले ही वो प्लेग्राउंड्स हैं, भले ही वो हमारे पास कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है कि डे केयर सेंटर्स हों, वहां पे भी बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं रियल टाइम एक्टिविटीज में, और स्पोर्ट्स वगैरह में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. और इसके अलावा बच्चों को वॉलंटियर करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अपना जो टाइम है ऑनलाइन स्पेंड करने के बदले ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो ऑफलाइन एक्टिविटीज में डालें. और जो कमेंट्स, इनफैक्ट ऑनलाइन जो कम्युनिटी है वहां पे भी ट्रोलिंग या एक दूसरे के लिए नेगेटिव कमेंटिंग करने के बदले प्रेज करना, देयर वाज अ नाइस इट फॉरवर्ड करके एक मूवमेंट था, तो इस तरह के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना. इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देयर वाज अ प्रोजेक्ट इन. Yeah, Dr. Dharna, I think we might have lost her audio. Please respond back if you could hear me, Dr. Dharna. All right. So we are left by the last 10 minutes in the conversation. Viewers, Dr. Dharna rightly mentioned about some of the significant points that need to be kept in notice, that what are the roles and responsibility of parents and teachers and all the members who are near and dear ones to us. Instead of just keep on saying to your adolescents or to your students or the kids that you are not doing this correctly, we should bear the responsibility of providing them a right path to travel. So Dr. Dharna have highlighted the points that a parent need not be overprotective. Then they could be the role model of the child that practice what you preach. Then observing changes in the behavior of the child, that remains one of the most important aspects when your child is going through the adolescent phases, and taking steps
at the very right moment. And lastly, they could also express themselves in front of their teachers and parents. So teachers, parents, they should provide an ambience or environment to their children so they can openly come up with their doubts, queries, whatever they feel like talking it out. So having with us in this last discussion, we would like to invite our last panelist, Dr. Ramesh, once again. So, sir, one of the most important questions is how to enhance academic achievement and career development with the help of social media. Guide us through this. Thank you very much, ma'am. Like Uzma ma'am has also partially covered like how social media can lead to career development and academic achievement. हम हिंदी में 8th क्लास में एक वो लिखते थे ऐसे, उसमें था विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो मुझे वो याद आ रहा है कि सोशल मीडिया एक वरदान या अभिशाप। तो इसका आंसर है कि हम पे है कि हम उसको कैसे यूज करें। ये पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज जो है वो हम एकेडमिक अचीवमेंट और करियर डेवलपमेंट में कर सकते हैं। क्यों, कैसे? देखो, इससे एक तो लर्निंग जो है वो इजी और फन है। बच्चा बुक से शायद वो कतराए या बुक्स में उसको बोरिंग लगे, वो फन वे में वो यूट्यूब से सीख लेगा वो सारे कॉन्सेप्ट जो उसको वहां से नहीं सुनाई देंगे। कोलैबोरेशन इसमें होती है, हमारे पास इतनी एप्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं जिसमें उसके पीयर्स भी होंगे, बडीज भी होंगे, तो उसमें एक उसको बड़ा फन और एक एंजॉयमेंट आती है, बिकॉज ही इज नॉट स्टडीइंग अलोन और शी इज नॉट स्टडीइंग अलोन, ही इज स्टडीइंग विद द पीयर्स, डिस्कसिंग। ऐसी एजुकेशनल फोरम्स है हमारे पास, ग्रुप डिस्कशंस हो जाती हैं, बड़ा कन्वीनियंट टूल है। आज हमको भी शायद, हम सब ने भी जब ये पीपीटी बनाई होगी तो हम विकिपीडिया पे गए होंगे, जो कि सोशल मीडिया के ही टूल्स हैं और ये वर्चुअली अवेलेबल रहते हैं। हमारी असाइनमेंट्स इनसे कंप्लीट हो रही हैं और हमें, जैसे उज़मा मैम ने पहले कहा था, कि क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। बुक में एक आइडिया होगा, यहाँ हमें 10,000 वीडियोस मिलेंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे, डिफरेंट विजुअलाइजेशंस थे। तो दिस इज क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग, क्रिएटिव वे ऑफ लिसनिंग। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूंगा कि वी रिलाई टोटली ऑन सोशल मीडिया ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। स्कूल क्लोजर में हमने कुछ 10,000 के करीब सोशल जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, फेसबुक हमारे पेजेस थे, उन फेसबुक पेजेस से एकेडमिक मटेरियल चढ़ाया, ऑडियोज, वीडियोज। सो वी कैन यूज इट कंस्ट्रक्टिवली बाय फॉर्मिंग द ग्रुप्स। क्लासमेट्स का अपना ग्रुप होता है, टेलीग्राम्स में अपना हम बना लेते हैं। तो एकेडमिक, अच्छा, ये दिस इज वन थिंग। देन ऑलरेडी मेंशन्ड कि जैसे लिटरेसी जो स्किल्स हैं हमारे इम्प्रूव होना, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना, व्हेन वी प्रिपेयर अ वीडियो, व्हेन वी प्रिपेयर अ टॉक, व्हेन वी इन्फोग्राफिक्स या इमेज भी डालते हैं बना के, तो इट इम्प्रूव्स अवर लिटरेसी स्किल्स, इट इम्प्रूव्स अवर creative skills, it improves our, then there are certain tools. If we go to next slide, so there are certain tools which can be used in classroom settings. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ओ लैब्स करके एक बनाया है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है। तो उसमें हम वर्चुअली प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई केमिकल की जरूरत नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, द चाइल्ड कैन डू इट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ जैसे वाइज ऐप का जिक्र किया उज़मा मैडम ने, तो उसमें हम पूरा LMS लर्निंग, टीचिंग लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सोशल मीडिया एम्बेड कर सकते हैं। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर के ऊपर हैं, बाकी सबके ऊपर हैं। तो दे कैन सेंड नोटिफिकेशंस, दे कैन सेंड मटेरियल्स, दे कैन सेंड डेट शीट्स। So in a sense, academic world is all on social media, and if we wish to limit ourselves, धारणा मैम ने अभी कहा कि कोई ऐप का नाम लिया जिसमें we can give only academic exposure. So if we limit our children to only academic exposure, definitely we can enhance the academic achievement of our youngsters. So I think moving to next slide, which is about careers. In terms of career development, all the एम्प्लॉयर्स, ये सिमरन मैम ने खुद ही कहा कि एम्प्लॉयर्स आर वाचिंग फॉर द टैलेंट्स। तो जो हम यूट्यूब में टैलेंट डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, इट मे गिव यू अ जॉब, वो आपको जॉब दे सकता है, नंबर 1। देन देयर आर प्रोफेशनल नेटवर्क्स, जैसे लिंक्डइन इज वन ऑफ द प्रोफेशनल नेटवर्क्स। तो लिंक्डइन से वो प्रोफेशनल्स को हायर भी करते हैं, उसमें प्रोफाइल भी बनाते हैं, रिज्यूमे भी पोस्ट करते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बड़े, आप कच्चे बादाम का, आप सबको एक इंस्टेंस है कि ही वाज अ bathroom singer, he sang a song and he overnight he was celebrity. So if we present our skills on social media, it can give us a platform like singing or media or any of such platform we can get. Then career agencies, for example National Career Service, so they are also available on social media for
एग्जाम्पल एनी करियर एजेंसीज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, तो आपने जो भी वो जॉब फेयर्स लगाते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हैं, जिस तरह की वर्कफोर्स उनको चाहिए, जिस तरह के स्किल्स उनको चाहिए, तो दे ऑल विल बी अवेलेबल थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. So we can have a watch, we can get to know which skills are required, so we can train ourselves on those skills. Then we can connect with alumni जो पुराने किसी organizations के हैं, we can connect with employer, we can connect with the best achievers, role models which we want to become, उनको हम follow कर सकते हैं. Recruitment agencies के साथ हमारे जो potential co-workers होने चाहते हैं उनके साथ. Facebook की ad हम सबने देखी होगी, how Facebook is providing एंटरप्रेन्योर्स को वो कैसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. कोई भी आइडिया आता है, मैं तुरंत ग्रुप बनाता हूँ या फेसबुक पेज बनाता हूँ उसको कमर्शियली. तो इट हैज बिकम सो इजी टू स्टार्ट आवर वेंचर्स, टू स्टार्ट आवर इनोवेशंस, टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम्स through these social media platforms. So I think that social media has a great and huge potential in terms of academic as well as career development of the students. Thank you. Thank you so much, sir, for explaining your point so precisely to all our viewers. You mentioned about the examples, a person who became an overnight sensation over social media for a song that he has been singing while selling off peanuts. Thank you so much. Then you also explained about the practical approach. Students or employers getting hired by different organizations with the help of certain social media platforms that are particularly meant for professional hiring. Thanks a lot. Thank you to all the viewers who have connected with this particular session of MANODARPAN Paricharcha. We would have loved to continue the session, but there were certain time constraints, so we'll have to wrap up just now itself. And I would like to take this moment to thank each of our panelists for their valuable and informative insights that they have shared with us in this MANODARPAN session. Thank you so much, Dr. Rajiv Ranjan. A vote of thanks for Dr. Seema K. Rajput. Thanks a lot, Dr. Usman Nazir, for being a part of this conversation. Thank you, Dr. Dharna Bhardwaj. Last but not the least, thanks a lot, Dr. Romesh Kumar. Thank you to all the viewers who have connected with NCRE for this particular session of MANODARPAN Paricharcha. I hope that you have got really valuable insights about the subject that talks about social media, peer pressure, coping strategy among adolescents. Thanks a lot. We'll meet again in our next session, that is webinar. Stay connected to NCRT. Namaskar.